Hello everyone, Jai Jagannath. Welcome to Biology Therapy. I hope you all are doing good. तो फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त को हैप्पी होली। तो समस्ते होली मनई मे भी न मनई किसी कथा नहीं, गोटे वर्ष न मनइले किसी प्रोब्लेम नहीं। सो यही सेशन में आम आज ये वीडियो डिस्कसन करने जाऊँ तुम मान मोस्ट इंपोर्टेंट किसी एमसीक्यूज जोटा कि तुम मैंने केमिस्ट्री एग्जाम दबा जाऊँ काली नुह पहर दिन फ्राइडे अच्छी तुम मान एग्जाम। तो से तुम किसी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू नहीं आसी जो थे कि आम वन बाय वन सब क्वेश्चन डिस्कसन करिया जहाँ भी अच्छी क्वेश्चन डिस्कसन करिया फर्स्ट टू लास्ट जाए देखा ट्राए कर जहाँ भी अच्छी वीडियो तुम फास्ट टू लास्ट माने देखा ट्राए कर सब क्वेश्चन माने आंसर निजे सॉल्व कर मु तो तुम डिस्कसन कराऊँगी आंसर भी माने डिस्कसन कर चली तो निजे वीडियो को पॉज कर ट्राए कर चलो तो बहुत किसी बेनिफिट्स पाइबो तुम माने केमिस्ट्री एग्जाम रे एमसीक्यू रे। आउ जो माने ए जाए भी सिलेक्शन देखिन तो जो माने जदी फर्स्ट टाइम पे हम चैनल को विजिट करछो एबे जदी एमसीक्यू देखि तमे चैनल को आसीजो ताकि निश्चित भाव रे तुम माने केमिस्ट्री रो सिलेक्शन मु देछि जोटा कि तुम माने लॉन्ग क्वेश्चन भी हेगला लॉन्ग क्वेश्चन रो सिलेक्शन देछि आउ 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स रो भी जो क्वेश्चन सब अछि सिलेक्शन देइ सारछि एइथरो कोन मु तुम माने को सिलेक्शन देछि क्लियर एइथरो सब सिलेक्शन मु देइ सारछि। तो जो माने भी देखिनो से सिलेक्शन टिके जाई कि देखि दियो आउ से हिसाब रे पढ़ा पढ़ी तुम माने करो क्लियर। सेकंड जिंस जो माने फर्स्ट टाइम पे हम चैनल को विजिट करछो निश्चित भाव रे चैनल को सब्सक्राइब करनियो क्लियर। आउ ए वीडियोटा को जदि लाइक करनो ताले निश्चित भाव रे एबे ही लाइक करनियो और निजे सांगन पाखु ही ए वीडियोटा शेयर करो जेमति कि समस्त पाखु पहुंची परियो समस्त किछि न किछि बेनिफिट्स पाइबे क्लियर। बहुत सारा क्वेश्चन अछि जोटा कि तुम मानकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहइबो बछा बछा क्वेश्चन सब अछि सेही क्वेश्चन हम आज डिस्कशन करबा। आउ जदि तुम मानकु ए पीडीएफ दरकार ताले टेलीग्राम चैनल जॉइन करजो टेलीग्राम चैनल तो जानिथिबो जो हम जाननो सेनो कहि रखिबी बायोलॉजी थेरेपी कैपिटल ले सर्च करिवो गोटे ही टेलीग्राम चैनल आसीबो सेतरे जाई कि जॉइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट सब तुम मानकर पीडीएफ हे गला आउ जहां भी क्लासेस होची अपडेट सेथिरे मिली जिवो क्लियर। जदि किछि प्रॉब्लम अछि किछि क्वेरी अछि तुम माने कमेंट सेक्शन रे मते जानि परिवो अदरवाइज तुम माने मते उठे व्हाट्सएप नंबर रे मते मेसेज भी करि परिवो जोटे व्हाट्सएप नंबर तुम माने कोन व्हाट्सएप नंबर होची 8598062969 ए नंबर रे मते तुम कोन करि परिवो व्हाट्सएप भी करि परिवो व्हाट्सएप कले मेसेज कले मु तुम माने रिप्लाई देबी क्लियर। तो स्टार्ट करिया देरी न करी चलो स्टार्ट करिया सेशन टाको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो an aqueous solution freeze at minus 0.186 degree celsius what is the elevation in boiling point हैला तुम माने को देछि फर्स्ट कोन फ्रीजिंग पॉइंट देछि बारे बॉइलिंग पॉइंट देछि देखो 1.86 देछि गोटे आ 0.512 देछि क्लियर। तो तुम माने को पचरछि कोन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पचरछि एलिवेशन कोन बॉइलिंग पॉइंट रो पचरछि ताले कोन आसीबो आसियो तुम माने और कोन 0.0512 आसियो क्लियर। तो एटा तो माने ओडी बाहर करिया पड़े। सेकंड क्वेश्चन बुझिया चलो सेकंड क्वेश्चन कोन देखो सेकंड क्वेश्चन देछि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड डिपेंड्स ऑन से कहला जो सॉल्युबिलिटीटा गोटे सॉलिड रो सॉरी सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड गोटे सॉलिड रो सॉल्युबिलिटी लिक्विड रे कहा ऊपर डिपेंड्स करे। ऑप्शन कोन कोन देछि देखो फर्स्ट देछि देखो नेचर ऑफ सॉल्यूट सेकंड देछि नेचर ऑफ सॉल्वेंट थर्ड देछि टेंपरेचर और फोर्थ देछि ऑल ताले तमे जानिछो गोटे सॉलिड को गोटे लिक्विड रे सॉल्युबिलिटी हवा पहिले ताको कोन कोन दरकार तारो सॉल्यू माने सॉल्यूट रो नेचर भी दरकार नेचर रो माने सॉल्वेंट रो नेचर भी दरकार और टेंपरेचर भी दरकार सेति में तो कोन हे जिवो तम मानकर ऑल हे जिवो आंसर तम मानकर डी हे जिवो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पाखरे 3 नंबर कोन अछि E naught of Mg2 plus Mg Zn2 plus Zn Fe2 plus FeR minus 2.37 volt minus 0.76 volt and minus 0.44 volt respectively এই সবর তম মানকৰ কোন দেইছি কি তম মানকৰ কোন ভোল্ট দেইছি ক্লিয়ার দেইছি কোন -2.37 ভোল্ট তারপর দেইছি কোন তম মানকৰ -0.76 ভোল্ট আর -0.44 ভোল্ট respectively which of the following is correct। तो এই পাখে करेक्ट কোন দেইছি কাই না দেখো রিডিউসিং होची তাহলে এই পাখে Mg2 Mg Zn2 Zn Fe2 Fe আসছে तो এই পাখে एक्चुअली रिड्यूस होची तो which of the following is correct तम मानको पचारची। फर्स्ट ऑप्शन देखो कोन अछि तम मानकर এই পাখে Mg ऑक्सीडाइज Fe Mg टा ऑक्सीडाइज करछि Fe को सेकंड ऑप्शन ने कोन देछि Zn ऑक्सीडाइजेस Fe थर्ड ने कोन देछि Zn रिड्यूसेस Mg2 और फोर्थ रे कोन देछि Zn रिड्यूसेस Fe2 तमे এই পাখে देखो Zn टा रिड्यूस करछि Fe2 को तो फोर्थ ऑप्शन तम मानकर कोन हे गला करेक्ट हे गला
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following cell was used in the Apollo space program? Apollo space program रे को following cell को यूज करा हुए बोली ए पाखरे तम मानू पचाची। फर्स्ट ऑप्शन देखो मर्क्यूरी सेल, सेकंड देची कोन डानियल सेल, थर्ड देची कोन तम मानकर H2O2 फ्यूएल सेल, आ गोटे कोन देची तम मानकर ड्राई सेल। ताली पाखरे कोन यूज करा हुए H2O2 फ्यूएल सेल को यूज करा हुए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन छी तम मानकर the order of the reaction तम मानो कि से रिएक्शन केते ऑर्डर बोली से पचारची। H2 गैसेस रे अछि प्लस Cl2 गैसेस रे अछि माने ए बके एरोमार्क के थिबो 2HCl गैसेस फॉर्म रे अछि ताहले एटा माने को ऑर्डर को जाउचल से पचारची हमें जानछि एटा अछि जीरो जीरो ऑर्डर। क्लियर। नेक्स्ट जीवा, 75% of a first order reaction was completed in 32 minutes कि कहिला गोटे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रो 75% टा कोन हिची फर्स्ट 32 मिनिट रे कंप्लीट होला। when was 50% of the reaction completed तो मानो से कहिला 32 मिनिट रे 75% कंप्लीट हे जाची ताले 50% केते बेले कंप्लीट हेतिला बोली से पचाची। तम मन जदी बाहर करिवो ताले सीधा एटा केते रे आसीबो 16 मिनिट रे आसीबो। क्लियर। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन वी डबल आई देखो कोन अछि, व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट किछले स्टेटमेंट देछि कोटा इनकरेक्ट बोली तम मानकू पचारछि। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो आयरन बिलोंग्स टू 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटा तो ठीक अछि। आयरन बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एफ ब्लॉक रे बिलोंग्स करनी जानिछो तम माने। आयरन बिलोंग्स टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एटा भी ठीक अछि। लास्ट कोन अछि देखियो आयरन बिलोंग्स टू द ग्रुप V ट्रिपल आई ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ताहले एटा ठीक अछि V ट्रिपल आई रे से बिलोंग्स करे। ताहले आंसर कोन हिजो तम मानकर आंसर जदी देखियो ताहले तम मानकर जोटा भूल अछि ऑप्शन इनकरेक्ट जेहेतु से पचारछि ताहले कोटा ऑप्शन बी होला तम मानकर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, which property of transition metal enables them to behave as catalyst कि ट्रांजिशन मेटल को प्रॉपर्टी ता से आनकू माने कैटलिस्ट हिसाब रे बिहेव करे को माने ताकू एटा दिथे। तो जदी देखियो ऑप्शन कोन कोन सी देखियो, फर्स्ट ऑप्शन देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट, सेकंड अछि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सी रे अछि कोन एलॉय फॉर्मेशन, डी रे अछि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जदी देखिछ तार जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अछि ताकू कोन करे ट्रांजिशन मेटल्स को तारो कोन आज कैटलिस्ट से आनकू एनेबल करे को बिहेव करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होजी द नंबर ऑफ आयंस formed on dissolving one molecule of FeSO4, FeSO4 रे तुम जदी डिसॉल्व करछो केतेटा आयन फॉर्म हबल से पचारची। FeSO4 सॉरी कंप्लीट मु कंप्लीट करनी बाके देखो FeSO4 ब्रैकेट रे NH4 रो होल टू SO4 डॉट 6H2 इन वाटर, जदी वाटर रे करछो ताहले केते आसीबो केतेटा आसीबो तार टोटल आयन केते फॉर्म हो जदी कैलकुलेट करियो ताहले 5 आसीबो। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सचेंज ऑफ coordination group by a water molecule in complex molecule results ताहले कोन आसीबो देखो फर्स्ट ऑप्शन कोन दीची आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइज सॉरी हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म, तापरे कोन दीची तम मानकर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तापरे कोन दीची ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ताहले पाखरे कोन कहिची एक्सचेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप बाय ए वाटर मॉलिक्यूल इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज रिजल्ट्स इन कोन हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म एथे। क्वेश्चन को जीवा एक्सआई नंबर जीवा, एक्सआई नंबर देखो which reagent used in increasing the carbon chain of an alkyl halide, alkyl halide रो कार्बन चेन को इंक्रीज करिया को को रिएजेंट यूज करा हुए। फर्स्ट देची HCN, सेकंड देची KCN, थर्ड देची NH4CN और फोर्थ देची AgCN, ताहले तुम जानिछो KCN रो यूज हेते। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट देखो एक्स डबल आई तुम मानको आईयूपीएसी नेम पचारची, आईपेक नेम पचारची हला कोन देजी ए पे देखो HCH तापर HClH आउ HCl देजी हला। तो यार आईयूपीएसी नेम तुम मानको पचारची, आईयूपीएसी नेम जदी जानछो ताहले केमती हो तुम आईयूपीएसी नेम देखो 11 डाइक्लोरोइथेन हो, 11 डाइक्लोरोइथेन हो। क्लियर, এটা কোন হবে 11 डाइक्लोरोइथेन हे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन अछि when n propyl methyl
ether is treated with cold HI যেতବେଳେ n propyl methyl ether को তুমি যদি ট্রিট করিও cold HI संगे তাহলে কোন হবছি বলি এই পাখরে পচারছি দেখো ফার্স্ট কোন আছে মিথাইল আয়োডাইড এন্ড n propyl alcohol আর ফর্ম তাহলে তো ফার্স্ট অপশন হি ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝবা নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোন আছে আইসোপ্রোপাইল alcohol on oxidation gives আইসোপ্রোপাইল alcohol on oxidation gives oxidation করলে কোন বাহারিবো এসিটোন বাহারিবো নেক্সট কোশ্চেন ଯିବା xb a mixture of formaldehyde and benzaldehyde in presence of NaOH gives কোন দব সে কোন কহিলা a mixture of formaldehyde and benzaldehyde in presence of NaOH gives কোন দব ফার্স্ট দেখো কোন আছে দেখো বেঞ্জাইল alcohol and sodium formate সেকেন্ড আছে সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট and methyl alcohol third ଅଛି sodium benzoate and sodium formate fourth ଅଛି benzyl alcohol and methyl alcohol তো তুমি দেখিও যদি কোন দাও সে benzyl alcohol and sodium formate এই পাখরে দেব তোমরা নেক্সট কোশ্চেন ଯିବା নেক্সট কোশ্চেন দেখো কোন আছে দেখো এই পাখরে एसीटोन कंटेंट्स एसीटोन्स पाखरे कोन थाई बोली से पचारची 9 bonds plus 1 bond ठीक अछि 9टा बॉन्ड थाई प्लस 1 बॉन्ड थाई ओ एसीटोन पाखरे नेक्स्ट देखो एक्स वी डबल आई एक्स वी डबल आई बुझिबा कोन अछि नाइट्रोलिक एसिड कोन कहला नाइट्रोलिक एसिड obtained from 1 degree nitroalkane and HNO2 reacts with NOH to form solution of color को color form करे से कहला नाइट्रोलिक एसिड obtained from 1 degree nitroalkane and HNO2 reacts with NOH to form the solution of color को color से red blue yellow white तो आसे हम मनकर रेड कलर आछे देखो जो माने भी ए जाय ए वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करो और निज सांगन पाकु ही शेयर करो निश्चित भाव वीडियो को लाइक करो पिला माने सब देखुचो बेनिफिट्स उठोचे बाकी वीडियो को कहीं लाइक करनो निश्चित भाव वीडियो को लाइक करो और निज सांगन पाकु ही शेयर करो और जदी हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करछो ताले निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलियोनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तुम माने प्रेस करनो जेमति कि जहां भी वीडियो अपलोड हेली तुम माने फर्स्ट कोन तुम माने पाखे ही पहुंचबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा XV ट्रिपल आई देखो XV ट्रिपल आई कोन अछि तुम माने देखो 2 nitropropane reacts with aqueous solution of TiCl3 to gives फर्स्ट ऑप्शन अछि कोन प्रोपेन सेकंड ऑप्शन रे अछि कोन तुम माने 2 amino propane थर्ड ऑप्शन रे कोन अछि प्रोप्रोपेन और फोर्थ ऑप्शन रे कोन अछि तुम मानकर कोन अछि प्रोपान 2 ओएल ताल कोन आसीओ प्रोप्रोपेन आसीओ तुम मानकर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो XIX कोन अछि देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स जो तुम माने कोल्ड ड्रिंक्स हो पिउछो जो आर्टिफिशियल आसी तुम मानको जो मीठा मीठा लागे से आर्टिफिशियल स्वीटनर टा एक्चुअली कोन बोल से पचारती फर्स्ट देखो दिछि ग्लूकोज सेकंड दिछि तुम मानकर कोन फ्रक्टोज थर्ड दिछि तुम मानकर कोन सेलुलोज और डी रे दिछि कोन तुम मानकर aspartame aspartame तो ये जो तमन कोन aspartame ही जाउची यूज करा जाय जोडा कोन तुम ड्रिंक्स फ्यूचर कोल्ड ड्रिंक्स हला जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेत्री जो मीठा मीठा तुम को टेस्ट लगे सेत्री कोन थाय एक्चुअली aspartame थाय क्लियर aspartame थाय सेत्री नेक्स्ट देखो x डबल x स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ स्टार्च कहार पॉलीमर स्टार्च समस्त जान जो ग्लूकोज रो पॉलीमर इजी क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि solubility of solute which dissolve with the liberation of heat decreases with first option अछि कोन decreases in temperature second अछि कोन increase in temperature third अछि कोन no change in temperature और d रे अछि कोन none of this ताले solubility of solutes which dissolves with the liberation of heat decreases with कोन increase in temperature clear next question जिबा देखो the boiling point of equimolar aqueous solution will be minimum for कोन आसीबो कहा पय मिनिमम आसीबो फर्स्ट देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सेकंड देछि कोन कैल्शियम नाइट्रेट थर्ड देछि कोन सिल्वर क्लोराइड और फोर्थ कोन देछि ग्लूकोज देछि क्लियर तो ग्लूकोज हे जाउची तमन करेक्ट आंसर जोथि कोन बॉइलिंग पॉइंट इक्विमोलियल एक्वस सॉल्यूशन रे तार कोन मिनिमम आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो on passing electricity through the dilute H2SO4 solution the amount of substance liberated at the cathode and anode are the ratio को ratio रे तारो आसीओ
जदि तुम गोटे इलेक्ट्रिसिटी थ्रो रे पास कल कोन डाइल्यूट H2SO4 को ताहले आसीबो कोन 1:8 तुम मानकर रेशियो रे से आसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोन अछि an electrolytic cell contains a solution of Ag2SO4 and potassium electrodes. A current is passed until 1.6 gram of O2 has been liberated at anode. The amount of Ag deposited at cathode would be केते आसीबो 21.6 ग्राम आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the rate of law for the single step reaction 2a plus b 2a plus b gives 2c is given by co-rate data. The rate of law for single step reaction 2a plus b equal to 2c is given by co-rate हबो जदि देखियो ताहले कोन आसीबो तम मानकर rate equals to k ब्रैकेट रे a b आसीबो। सेमति जदि देखियो b रे कोन अछि rate equals to k a square b ताहले एटा ठीक हे जिवो। नेक्स्ट देखो कोन अछि vi नंबर देखो, a catalyst has no effect on rate of forward reaction, activation energy, threshold energy, तापर अछि heat of reaction ताले कोन आसीबो तम मानकर a catalyst has no effect on heat of reaction। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर जीवा, transition elements are good conductors of current because they are metal, they are all solids, they have free electrons on outer energy orbits, तापर डी रे अछि all of these। हम जदि देखिबा ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट बिकॉज़ से आने गोटे कोन भलो मेटल भी, दे आर आल्सो सॉलिड्स एंड दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन आउटर एनर्जी ऑर्बिट्स ताले all of these हे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following forms a stable plus 4 oxidation state कोटा फॉर्म करिवो देखो ए पाखरे कोन कोन देछि La ब्रैकेट रे Z equals to 57, B रे देछि कोन Ce ब्रैकेट रे Z equal to 58, C रे कोन देछि Eu Z equals to 63 आउ D रे कोन देछि Gd Z equals to 64 ताले Ce तम मानकर Z equals to 58 आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following complex or the complex ion will show geometrical isomerism कोटा geometrical isomerism ए पाखरे तम मान शो करियो देखो। फर्स्ट कोन अछि देखो तम मानकर Pt ब्रैकेट रे NH3 रो होल टू Cl2 ताले फर्स्ट ही शो करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, complexes with bidentate ligands are called, complexes with bidentate ligands are called कोन कुहा जिवो ताकू देखो। फर्स्ट अछि ligands, सेकंड अछि chalates, थर्ड रे अछि कोन complexes, डी रे अछि non ताले मानो कोन कहे chalates बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ethyl bromide and isopropyl chloride can be distinguished by केमति डिस्टिंग्विश करा जिवो alcoholic AgNO3 फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो कोन अछि vicinal and geminal dihalides can be distinguished by केमति डिस्टिंग्विश करबो याकू कि तम मनकर KOH aqueous solution फर्स्ट ठीक अछि aqueous solution वाला ठीक हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन अछि how many alcohols and how many ethers are represented by the formula C4H10O4 कोन आसीबो एटा कि फर्स्ट देखो 4 alcohols and 3 ether ताले फर्स्ट ही ठीक अछि। नेक्स्ट जीवा, नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा, excessive solubility of lower alcohol in water is due to excessive solubility of lower alcohol in water is due to कोन आसीबो फर्स्ट देखो कोवेलेंट बॉन्ड अछि, सेकंड अछि कोन देखो आयोनिक बॉन्ड अछि, थर्ड रे अछि कोन अछि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर और फोर्थ रे अछि नन ऑफ दिस ताले जदि देखिबो ताले कोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर हे जिवो। नेक्स्ट देखो, vinegar obtained from sugar cane has कोन vinegar जो obtain करा हुई sugar cane तारो त मानको ए पाखरे फार्मूला पचाछि। फर्स्ट देखो कोन अछि C3COOH ताले फर्स्ट ही हे जिवो। नेक्स्ट देखो कोन अछि which acid is strongest को एसिड त मानको स्ट्रांगेस्ट बोली पचाछि ताले कोन जिवो त मानको फर्स्ट ही हे जिवो CCl3COOH। नेक्स्ट देखो acetanilide on nitration followed by alkaline hydrolysis gives कोन दबो कोन आसी ए पाखरे देखो O नाइट्रो एसिटानालाइड तापर अछि P नाइट्रो अनिलीन ताले आसीयो कोन त मानको P नाइट्रो अनिलीन ता आसीयो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the number of possible structure of amines C7H9N having one benzene ring
is केते आसीबो the number of possible structure of amines C9 sorry C7H9N having one benzene ring is केतेटा possible हे परियो बकरे पांचटा हे पारे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन छी तम मानकर फर्स्ट देखो at high altitude the boiling point of water decreases because boiling point water decrease होय कोन पई काहे ना atmospheric pressure is low थाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन इज 1.4 into 10 to the minus 3 mole per liter per atmosphere at 298 Kelvin. How much of oxygen is dissolved in 100 ml at 298 Kelvin when the partial pressure of oxygen is 0.5 atm? ताहले एटा तुम मानन कैलकुलेट करियो पड़ियो आसीयो के तुम मानकर 22.4 mg आसीयो क्लियर देखो जो माने भी वीडियो को लाइक करना एजे ताहले निश्चित भाबे वीडियोटा को लाइक करो काहे ना देखो समस्त वीडियो देखुछ समस्त जानिचो किछि ना किछि बेनिफिट्स होछि एग्जाम रे तुम मानकर हेल्पफुल होछि तो तुम लाइक कहीं करनो वीडियोटा को लाइक करो तुम जदी लाइक करियो सेति पिला पाखरे रीच पहुंचीबो वीडियो पहुंचीबो और समस्त पाइबे सेकंड जिंस तुम जदी लाइक करियो मते मोटिवेटेड फील हबो आ मु तुम मन पे सब एग्जाम पे जहा भी माने अपकमिंग एग्जाम अछि सेति में मु तुम मन पे वीडियो बनेबा को मोटिवेटेड फील करबी सेति में समस्त जो माने भी लाइक करनो वीडियोटा को निश्चित भाबे लाइक करो निज सामान पाक भी कोन करो शेयर करनो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलो the number of electrons involved in redox reaction when 1 Faraday of electricity is passed through an electrolyte in solution is कौन आसीबो ताहले 6 into 10 to the power 23 फर्स्ट नहीं ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सी which of the following solution can be stored in copper vessel ले को सॉल्यूशन को तुम स्टोर करी रखि परियो फर्स्ट देछि देखो AgNO3 सेकंड देछि AuCl3 थर्ड देछि ZnCl2 तापर देछि ऑल ऑफ दिस तुम समस्त रखि परियो कि नाही ताहले कोन ZnCl2 को तुम रखि परियो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ I53.28 जोडे कोन देछि तुम मानकर t by 2 टाइम हाफ टाइम देछि equals to 25 minutes left after 50 minutes ताहले कोन आसीबो केते आसीबो तुम मानकर एबे हाफ टाइम तुम मानको 25 मिनिट देछि दुथरे कोन I53 128 रो ताहले 50 मिनिट पर केते आसीबो आसीबो के तुम मानकर 1/4 आसीबा कथा ताहले ऑप्शन कोटा हिजो ऑप्शन बी हिजो करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय गोटे रिएक्शन रो मॉलिक्युलरिटी केमते तुम माने डिटरमाइन करिवो स्टाइकोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन तारे फर्स्ट ही होला करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा the color of d block elements is due to the color of d block elements is due to कोन आसीबो dd ट्रांजिशन आसीबो ऑब्वियस कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रिएक्शन ऑफ ए lanthanoids contraction is कोन कहला region of lanthanoid contraction is sorry region of lanthanoid contraction is कोन आसीबो negligible screening effect of f orbitals increasing nuclear charge decreasing nuclear charge fourth कोन देछि decreasing screening effect ताले कोन आसीबो negligible screening effect of f orbitals clear next देखो next question number of unpaired electron of ni in ni CO2 whole 4 sorry CO रो whole 4 r केते आसी पाखरे 0 आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन हिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन द टू कंपाउंड सल्फेट पेंटामाइन कोबाल्ट 3 जोटा ब्रोमाइड एंड सल्फाटो पेंटामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड रिप्रेजेंट्स कोटा को तमनो रिप्रेजेंट्स करंती माने ताले लिंकेज आइसोमराइजेशन आयनाइजेशन आइसोमराइजेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमराइजेशन ना नो आइसोमराइजेशन ताले नो आइसोमराइजेशन आसीबो एना नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन elimination reaction that is in the formation of alkenes the reactivity of halogens in alkyl halide follow the order को order follow करिवो ए पाखे देखो तमे
जदि देखिए ताहले कोन अछि आई बी आर सी एल अछि तापर देखो सी एल बी आर आई अछि तापर देखो बी आर सी एल कोन अछि आई अछि आ ओटे नन ऑफ दिस अछि ताहले कोन आसीबो आई बी आर सी एल आसीबो ताहले फर्स्ट ऑप्शन हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Victor Grignard was awarded Nobel Prize for making useful compound by joining organic compounds to कहा संगे जॉइन करे तांको मिलिथिला मैग्नीशियम संगे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following is a second alcohol secondary alcohol कोटा तळे तम मानक पचारची ताले देखो पाखरे CH3 CH2 CH CH3 रो होल OH ताले एटा होची तम मानक रोडे सेकेंडरी अल्कोहल हला नेक्स्ट को जीवा on conversion into the Grignard reagents followed by treatment with absolute ethanol, how many isomeric alkyl chlorides would yield 2-methyl butane? 2-methyl butane. केतेटा आसीबो ए पाखरे केतेटा आसीबो चारिटा आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो formic acid is obtained by the hydrolysis of formic acid is obtained by the hydrolysis of कोन पाइबो formic acid को तमे HCN ही पाइबो नेक्स्ट क्वेश्चन monocarboxylic acid shows functional isomerism with कौन कहला monocarboxylic acid shows functional isomerism with कहा संगे functional isomerism शो करिवो ईस्टर संगे ही शो करे नेक्स्ट नंबर देखो the number of isomeric amines given by C3H9N is dash केते आसीबे पाखे the number of isomeric amines given by C3H9N केते आसीबो 4 आसीबो क्लियर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखो the carbylamine reaction is given by compounds having co compound था ये पाखरे NH2 group था हैला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the functional unit that is repeated in a protein molecule is गोटे कोन कहला functional unit जोटा की protein molecule repeated हेकी थाए कोटा ताहले peptide linkage थिबो ए peptide linkage नॉर्मल कथा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ग्लूकोज may be converted into fructose by कौन कहला ग्लूकोज may be converted into fructose by ओसाजोन फॉर्मेशन लैक्टोन फॉर्मेशन किलाइन सिंथेसिस तापर देछि नॉन ताहले कोन ए बागे तम माने करो ओसाजोन फॉर्मेशन रे कन्वर्ट करि पारियो तो देखो बहुत लेंदी हेउची वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर हे सरलेनी सो देखो ए पाखे एतिकी रे रखिया नेक्स्ट गुटे आ गुटे वीडियो तम माने पे अपलोड करबी देखो बहुत सारा क्वेश्चन अछि हला तमरो बहुत सारा क्वेश्चन अछि नेक्स्ट वीडियो रे आउटे मान जेति रहि जाईची ताको हमें डिस्कशन करिया सो जो माने भी वीडियो टाकू ए जे देखि कि लाइक करनो निश्चित भाबरे लाइक करो निजो संग मानन पाकू भी शेयर करो आ जदी हम चैनल रे फर्स्ट टाइम पे विजिट करछो निश्चित भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबनी क्लियर तो पुनी थरे देखाबो नेक्स्ट पार्ट रे तो नेक्स्ट माने नेक्स्ट पार्ट रे पुनी थरे में आसी डिस्कशन करे जहां भी क्वेश्चन रहि जाईची समस्ते अपडेटेड टिके रहउतो आ ए पीडीएफ पाइबो टेलीग्राम चैनल जॉइन करने ठीक अछि थैंक यू ऑल हैव अ गुड डे